So next we have integral root x into 3x square plus 2x plus 3 dx. Again ये भी उसी तरीके से होगा. We will multiply out and separate. So integral root x into 3x square, 3 बाहर आ जाएगा. Root x into x square dx plus 2x into root x dx, 2 बाहर आ जाएगा. x into root x dx plus 3 into root x dx, उसके लिए भी इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा एंड 3 बाहर आ जाएगा. सो 3 इंटीग्रल रूट x dx. तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 इंटीग्रल x to the power half into x square dx plus 2 integral x into x to the power half dx plus 3 integral x to the power half dx. This is nothing but 3 integral x to the power half plus 2 dx plus 2 integral x to the power 1 plus half dx plus 3 integral x to the power half dx. So अब आपको मिलेगा 3 integral x to the power half plus 2. Half plus 2 is equal to 5 by 2. So x to the power 5 by 2 dx plus 2 integral x to the power 1 plus half. 1 plus half का मतलब है 3 by 2 dx plus 3 integral x to the power half dx. Now हम इसी रूल से इसको करेंगे. So 3 उसके बाद x to the power 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1 जैसे पहले करते आए हैं plus 2 into x to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus 3 into x to the power half plus 1 divided by half plus 1 plus final constant c. Now 5 by 2 plus 1 का मतलब है 7 by 2 पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा. So 3 2 to 6. So 6 by 7 x to the power 5 by 2 plus 1 that is 7 by 2 plus 3 by 2 plus 1 का मतलब है 5 by 2 वो भी रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 2 into 2 4 by 5 x to the power 3 by 2 plus 1 that is 5 by 2 plus 3. यहाँ पे हाफ प्लस 1 आपको मिलेगा 3 by 2. So 3 ऊपर और नीचे 3 by 2 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट करके एंड 3 नीचे रह जाएगा. 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. So we get 2 into x to the power half plus 1 that is 3 by 2 plus c. So this is the final result.